कर दिया है और चलते नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे। और जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है हम लोग थोड़ा व्यू देखते हैं। मौसम तो अच्छा लग रहा है इसका, बट एक्चुअली हिल स्टेशन है तो यहाँ पर मालूम चलता नहीं कब क्या हो जाए और कब मौसम चेंज हो जाए। Sceneries. There's a construction work is going on. और ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं होटल्स एंड सारे बने हुए हैं। और ये बेसिकली सिक्किम के यही आपका है, सामने दिख रहा होगा सबसे बड़ा पहाड़ी। आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं। Let me just zoom. हाँ, this one. So ये है पूरा और काफ़ी अच्छा है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है ये, मतलब इसमें नहीं बोल सकते हम कि खराब है कुछ ऐसा। सीन काफ़ी अच्छा है, मुझे भी देख पा रहे हम सामने देखिए। तो वैसे ये आई थिंक तिब्बतियन काइंड ऑफ फ्लैग्स जो लगाते लोग, या तिब्बतियन फ्लैग जो लगाते हैं वाला। अभी हम लोग यहाँ से आए थे, मतलब पीछे से आए थे जहाँ से कुछ सीनरी दिखाया था मैंने। ओके, नाउ वी आर heading towards the upper side of the Kadong area as we point new. Let's take a look up to that point and then we'll see. बहुत ज़्यादा ये हाइट पे है तो जो मतलब नॉर्मल पब्लिक होती है उन लोग चलने में काफ़ी दिक्कत आएगा जिसके लिए। सो एरिया काफ़ी अच्छा है, चारों गाँव में नो। I'm just there just going to have breakfast. There's a view. Beautiful artifacts. Oh, Mr. Bean. Mr. Bean. It's totally yes, and it's Nepali or some Buddhist chanting. The view. Okay guys, so इधर भी सेम बनाया हुआ है, and you can see. जस्ट पूछा यहाँ का मतलब स्टाफ से, उन्होंने अभी जस्ट रूम किया है। एंड अभी मैंने जस्ट उन्होंने पूछा कि मतलब यहाँ से एमजी रोड जाने का क्या मतलब फेयर एंड ऑल है, तो जैसा कि 20 रुपीज़ शेयर क्या देता है यहाँ से फॉर एमजी रोड, विच इज़ अबाउट 2.5 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड एमजी रोड में थोड़ा सा 2 अट्रैक्शंस हैं और उसके आसपास जितना भी होगा। सो विल जस्ट वेट, तो हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं फिर मतलब रास्ते में क्या पड़ता है। So guys, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से
गोइंग टुवर्ड्स MG रोड। उससे पहले थोड़ा सीनिटी जो आपको दिखा दूँ, जो कि यहाँ पे अब है। मॉर्निंग का तो ठीक है, बट अभी का थोड़ा और अच्छा भी रहेगा। Guys, now I'm going towards MG रोड और लेट्स सी यहाँ पे कुछ शेयर्ड कैब मिलता है तो हम लोग वो भी पिक करेंगे यहाँ से। शेयर्ड कैब लेके हम लोग यहाँ से MG रोड की तरफ जाएंगे एंड देन वहाँ पे जो भी लोकल साइट सीइंग है वो आपको मैं दिखाता हूँ। थैंक्स। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पहुँचा हूँ, जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ये फेमस अट्रैक्शन है, तो टूरिस्ट पॉइंट भी है ये। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, अभी मैं MG रोड पे हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी काफ़ी क्राउड है एंड अच्छा है, मतलब टूरिस्ट मतलब काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे। और पीछे जैसे मैं पीछे दिख पा रहे होंगे आप, पूरा एक फिश मार्केट लगा हुआ है। आज मतलब कुछ फेस्टिवल है यहाँ पे, तो फिश मार्केट लगा हुआ है। एंड उसके अलावा यहाँ काफ़ी अच्छा है, मतलब जो भी जैसे इसके जो अंदर जितना भी सीनरी ग्राउंड है, जितने भी मतलब अट्रैक्शन पॉइंट है, काफ़ी अच्छा है। जो फिश मेला लगा हुआ है और फिश मेला सिक्किम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बड़ा बाज़ार के अंदर हूँ और ये बड़ा बाज़ार का टेरेस है। यहाँ से मतलब पूरा सिक्किम का थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ से भी दिखता है और व्यू यहाँ से भी अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहीं दिखाता हूँ और बाकी थोड़ा ड्रोन शॉट लेके दिखाता हूँ आपको मैं कि यहाँ का आसपास एरिया कैसा है।
फ्रेंड्स फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, और नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी होती है। होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। बाकी जब तक के लिए स्टे सेफ़, और ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल की सपोर्ट के लिए और मेरी मोटिवेशन के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।